فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. I welcome you here in this exciting diagnostic ophthalmology session, decoding the secrets of OCT. And we start the session with basic concepts and correlation of the histopathology of the retina with OCT. And we welcome chairman of the session, Dr. Sharif Hashmani. वेलकम सर। थैंक यू सर। आगे आए सर, आगे नहीं सर, वो स्क्रीन लगी है ना वहां भी। चल ठीक है, बैठे। आप तो बैठे हैं सर। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर लाइबा आसिफ, शी इज PGR in Mughal Eye Hospital, a first year resident. Mashallah, doing great, being a junior beginner ophthalmologist. Let's see what she can tell us about correlation of OCT with histopathology and anatomy of the retina. Please, Dr. Laiba Asif. आगे आगे आ जाओ बेटा, बिल्कुल इजी हो के बैठो और जो दिल चाहे पूछिए। हाँ, ताकि स्पीकर्स जो उनको भी थोड़ा हौसला हो कि कोई सुनने वाला है। And it will go a long way in your career. You will remember this session. We have Dr. Sharif Hashmani with us, one of the best scientific minds in ophthalmology. But I transferred this mind to my son, Dr. Noman, who OCT is champion of OCT. And right, you learn a lot. इसलिए कि ये जो सेशन होते हैं ना, इसमें ही आप सीखते हैं. और this is a Dr. Jawad Nazari जो है ना, is an asset to your community. और ये जो डॉक्टर साहब वहाँ काम कर रही है मुगल आई हॉस्पिटल में, हमारे दो बंदे हैं वहाँ पर, डॉक्टर समीर इरफान और दूसरी समीर पहले थी अब जी डॉक्टर रेहान मोइनुद्दीन शेख सुपरवाइजर हैं सर मेरे। तो हमारे बड़े अच्छे बरखुरदार हैं समझते जी। तो अगर कोई गड़बड़ करे तो आप मुझे शिकायत कर सकती हैं। Bismillahirrahmanirrahim. So I'll start this session by giving an overview about this session. So what are we going through today in this session of OCT? We'll go through the OCT foundations and navigation through the retinal anatomy. We'll go through how do we interpret an OCT reports with the help of different case series and different cases that we're going to study. And then we'll have a discussion about OCT beyond traditions, which will be consisted of a talk on OCT anterior segment and OCT angiography. And next we'll have to summarize the session with the help of question answers and conclusions. So I'll start the session from the section 1, consisting of OCT basics and anatomy. So why OCT? OCT because it is a non-invasive device that will give us live in vivo images of the retinal tissues and the structures we are going to study. So what principle does the OCT use? We all are familiar with the concept of
ultrasound. The ultrasound uses sound waves and the OCT uses light. The light crosses the tissues and the OCT interprets the different layers of the tissues. All of this is happening in vivo. We are taking live images of the tissues. So this is a beautiful diagram that explains the layers of OCT, and the terminology we use in OCT is simply in two words: hyporeflective, hyperreflective. Like all the radiology images and scans have their own nomenclature, OCT has its nomenclature of hyporeflective and hyperreflective. MRI we say hypodense, hyperdense, and here we say hyporeflective, which is simply duller, blacker, and hyperreflective, which is a brighter tissue. So this is a diagram from American Academy of Ophthalmology. I will explain this on this beautiful diagram, which correlates the histopathology and the live section we are seeing in the OCT. So moving on here, you can see from inner to the outer side, the layers of OCT are here. We will individually discuss the anatomy of these layers and we will individually characterize them, that how they appear on the OCT. So this is the diagram and we will elaborate each layer individually. First of all, there is the fovea. The fovea is simply the depression. Next, we have the layer of nerve fibers. The nerve fiber layer here, you can see here, it is. Next, we move on to the layer of ganglion cell. The ganglion cell layer, I will like to briefly say here that the cells are duller and the plexiform layers appear brighter. They consist of plexuses and the light scatters and they appear brighter. So the plexiform layers will be hyperreflective. And the cell layers, ganglion cell layer, inner nuclear layer, outer nuclear layer, which consists of cells, they will be duller, blacker, on the dark side. Moving on to the next layer, which is the plexiform layer, it appears as a bright layer. So the plexiform layer is this layer on retina. This one here, which is highlighted in green. We all know the histopathology consists of ganglion cells and bipolar cells, synapses. So the synapses form the plexiform layer. Next is the inner nuclear layer. Nuclear layer is a cell layer. So remember that it will appear on the darker side. When we remember the terminology black, white, it becomes way lot easier to interpret the different layers and memorize them. Next is the outer plexiform layer. Again, the outer plexiform layer is located in the outer retina and contains the synapses between photoreceptors, bipolar cells, and horizontal cells. Next, we move on to the outer nuclear layer. I want to focus here that the outer nuclear layer is normally thickened at the fovea. Remember this thing because we're going to use this in order to interpret our further cases of OCT. So remember, it is normally thickened at the fovea. Moving on to the external, these four hyperreflective bands. Emphasize on these. We're gonna have to look at these in all the pathologies we are going to see in the cases. So the first outer hyperreflective band is the external limiting membrane. The second one is the ellipsoid zone. It is a very important zone. Many theories have suggested that what is in the ellipsoid zone. These ellipsoid zone consists, some scientists say it consists of mitochondria. Next is the interdigitation zone, which is normally not seen on most of the OCTs. And this is the retinal pigment epithelium. The retinal pigment epithelium is the fourth hyperreflective band. We are seeing here 1, 2, 3, and 4. These four layers are important. And next is the choroid. The hyperreflectivity of the choroid is going to change in different pathologies, and we have to notice the choroid hyperreflectivities or hyperreflectivity. And this is the summary of all the layers that I have explained. Next is the section of how to interpret an OCT. I would like my chairman, okay. Next, we are going to move. This is a roadmap that I designed in order to interpret the OCT. First of all, you're going to have to look at the reliability. Is the signal strength good or not?
Next, we are going to have an artifact check, and followed by the different normal and abnormal structures, vitreomacular interface and all the layers. Is there a pathology? Where is the pathology? Is the pathology hyporeflective or hyperreflective? So memorize this map, and we are going to use this map in the different cases. So the checklist is reliability acquisition, any artifacts, Ross appearance, and presence or absence of a pathology, and what is the pathology and where is the pathology. So the reliability, we have to check for the signal strength, any media opacities which gonna, for example, a dense cataract can interfere with the signals. Artifacts, I have summarized the artifacts in this next slide. Here you can see that there may be software errors resulting in the misidentification of the layers. Like here, the software had to identify this layer, this interface layer, in the form of inner limiting membrane, but it misinterpreted this. Next, a mirror artifact can be present, which causes the image to be folded upon itself, or the scan is out of the picture, out of register. We are not going to have a scan here, for example, here. Next, a blink artifact may result in a straight line where the signal strength was missing and the image was not captured. We have to look if the OCT has any artifacts or not, and then we have to go through. So this is the slide I have already gone through. So now I will ask the audience to check in and identify the various layers. So can anybody identify this layer here? Blue. I have already shown it. Never mind. Okay. I will ask you, what is this layer here? Can anybody tell me this one? Outer nuclear layer. Yes, this is the outer nuclear layer. And please, can anyone name the four hyperreflective bands that I told? Retinal pigment epithelium. Yes, the outermost is the retinal pigment epithelium. Ganglion cell layer. The ganglion cell layer is right here. This one. This. The duller brand. So we will continue this quiz section at the last of it. I will move on to the next next slide because we're short on time. Always short on time. Yes, indeed. Only we are ahead of time. The whole West is short. ये स्क्रीन पे ये आ रहा है, इसको प्लीज ठीक कर लें. ठीक है, आता जाता रहता है. Now this is the case studies that we have included in our session. I would like to call Dr. Ziaul Mazri for further. I am the Dr. Noman. Please come to the podium. दूसरी लगाना है presentation. लाइव इधर आओ. आपकी अपलोडेड है? हाँ. ये डॉक्टर नुमान हाशमानी की लगाएंगे. आइए. बातचीत शुरू करें. Got time to class. सलमान खान. नेम क्या है उसका सर? नुमान भाई. D segment. मेन जो है एंटीरियर सेगमेंट इसमें नहीं है बेटा. जो मेन और जो भी जाना पड़ेगा और अपलोड की हुई है. जो उधर से पर से आपके पास है ना? आप भी चेंज कर लें. प्रॉपर चैनल. हाँ. ये दूसरा बड़ा बाकायदा है. हम हैं रोशनी का बेकायदा इंतजार. My talk today is on anterior segment OCT. तो हम लोग सब we all see posterior segment OCT quite often in our clinics, but I have seen very few presentations on anterior segment OCT और उसकी क्या interpretation है, किस तरीके से करनी है. So let's go through it. So potentially आपकी जो anterior segment OCT है, it can image all of these places, the tear film, cornea, conjunctiva. But हम today आज हम strictly cornea पे focus करेंगे because obviously बहुत बड़ा topic है, can't really cover everything. So scan mode में this it goes for both posterior and anterior segment OCT दोनों के लिए है ये. कि scan quality आपकी है वो obviously the signal पे तो depend करती है, but a lot of us don't realize it actually depends on the number of scans that you're taking. So you have various modes on the OCT. जिसमें आप 30 scans, 60 scans, and then there's a single line scan. So if there's ever a pathology that you want to know or you want to interpret in more detail, so you can always ask your technician कि यार single line scan मुझे दो. वो single line. So what happens is light energy finite है, and it's hitting whatever pathology that you're hitting.
तो if you go to a single line scan, वो एक scan पे पूरी light जो है वो focus कर देता है. And if you do it on 60 or 30, it divides that light into those various scans, तो उसकी quality relatively lower हो जाती है. Then you also have modes where vertical and horizontal scan है, very important for both posterior and anterior segment. Anterior segment में it becomes a little bit more important because आपकी pathologies, for example, like keratoconus or pellucid, वो horizontal line scan में, because you have to differentiate between the thickness of the cornea from the inferior to the superior, तो वो आपको vertical scan में तो दिख जाती है, horizontal scan में आप miss कर जाते हैं. So these scan protocols are very important to actually understand how you're going. You have a technology. ये अब होगा कैसे? अच्छा, then It belongs to Hashmani, the senior. अच्छा, then we have ways of representing the image on the OCT. अब ये posterior में तो इतना important नहीं है, but anterior में बहुत important हो जाता है, as you will see in the next few cases. कि there's two ways of representing the image, black on white and white on black. तो white on black पे तो हम बहुत used to हैं, but black on white sometimes exaggerates pathologies जो आप black on white पे miss कर जाते हैं. So you'll see in the next few slides जब मैं दिखाऊंगा, तो it does exaggerate. And then what are the layers जो OCT पे हमें दिख रहे होते हैं? तो आप जो पहला जो ये hyper reflective जो दिख रहा है, this is the tear film. Then you go in and you get epithelium जो hyper reflective band है. Then ये जो छोटा सा पतला सा आपको दिख रहा है, ये Bowman's layer आ जाती है. Then this entire thing is the stroma, and then this hyperreflective zone at the end is the decimage and the endothelium. तो ये इस चीज की interpretation भी बहुत important है, because pathology obviously एक layer की भी हो सकती है. So just diving straight into cases, basics तो हमने देख लिए हैं, तो एक interpretation आपको समझ में आएगी कि क्या है exactly. So this is a 44-year-old female complains with gradual decrease in vision. तो कोई comorbids नहीं थी, but it just came to the clinic with this pathology. ये देखने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा. It's a very easy case कि what this is actually. So when you go into the OCT is female की, you can, so there's several findings here. So you can see epithelium पे you are starting to get these bullae, and right here another bullae here, and then इधर आपको hyper reflective decimate membrane endothelium नजर आ रहा है. So this is, and then you get, and then you getting localized edema. तो इधर आप देखें periphery में the edema is not there, and then in the center you got edema and a localized edema. So this was a case of Fuchs endothelial dystrophy. इनको एक आंख में थी, एक आंख में नहीं थी, and then obviously over the years she's going to develop it in the other one. Then Fuchs endothelial dystrophy. अब यही चीज जब advance में चले जाती है, तो you get these generalized Descemet's folds and obviously scarring की तरफ जाता है. अच्छा, this is a fairly the refractive case, but this is a 22-year-old male with complaints of decrease in vision. So this is a very classical case. अगर कोई topography देखता है, तो they can say that this is the butterfly shape and this is pellucid marginal degeneration. But pellucid marginal degeneration में मसला ये है कि it is a pathology of the periphery. जो topography है, वो map करता है central 9 millimeters को, especially जो majority of modes है. You can go beyond that. So this is never diagnostic for pellucid marginal degeneration. You need something beyond that. OCT या Scheimpflug image आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है? Sometimes you will miss pellucid या pellucid-like pictures, and you will diagnose it as keratoconus. तो ये आप picture देखें, बिल्कुल again vertical line scan है. अगर ये horizontal line scan होता, we would have missed it. तो आप periphery में जाते हैं, तो इधर आपको बिल्कुल thinning मिल रही है, and it's a classical case of pellucid marginal degeneration, not keratoconus. And then OCT anterior segment जो है वो आपको ये भी देता है. This is called an epithelial map. तो वो epithelium को basically the thickness of the epithelium बताता है. So in various disorders it changes a lot. Keratoconus में ये एक donut shape बन जाता है, जो आप I don't think I have it in this presentation, but एक donut shape बन जाता है. This is a pellucid marginal degeneration where एक part में, so basically जहाँ आपको thinning मिलेगी और steepening मिलेगी, उधर thickening of the epithelium मिलेगी, because epithelium का function ये है कि वो refractive surface को uniform रखे. तो जहाँ आपको एक स्टीफनेस मिलेगी, उधर थिकनिंग मिलेगी, एंड जहाँ आपको फ्लैटनेस मिलेगी, उधर वो एक थिनिंग ऑफ द एपिथेलियम मिलेगी. Then this is a case of so 22-year-old man who underwent a LASIK surgery a month back. Okay, then he had a gradual deterioration of vision within that month. Okay, this was a referral case जो हमने देखा था from another institute because they couldn't figure out what it was. He had hand motion vision. This is a 22-year-old patient, LASIK करवाई है to get into 6/6 vision, and then best corrected उसकी hand motion हो गई है. The key point here is that this person was on steroid and antibiotic therapy. The people there were taking
IOPs and everything वो ले रहे हैं. It does there's nothing on the slit lamp. So what exactly was the problem with this person? उसने अचानक से hand motion कैसे हो गया within a month? फिर हमने anterior segment OCT करवाया. If you know what you're looking for, you know what this is. So this was interface fluid syndrome. So इसमें क्या होता है? I'm just going to go through a brief overview of what it is. इसमें क्या होता है कि because this is a weak zone, ये जो flap area है, flap के नीचे जो area बनता है LASIK में, there was a high intraocular pressure, जिसकी वजह से fluid leaked out into the flap interface, and what that caused was अंदर तो उसको optic neuropathy and everything develop हो रही है, but in the interface, because of the interface, आपको जो intraocular pressure on gap मिल रहा है वो normal मिल रहा है. So this person repeated measurements पे normally आएगा, but we had to stop steroids and start anti-glaucoma therapy with oral anti-glaucoma therapy as well to get this guy to become normal. So एक महीने से basically glaucoma, high glaucoma है, but he wasn't recognized as glaucoma. So interface fluid syndrome या इसका जो पुराना नाम था pressure induced stromal keratitis. Then I hope screen वापस आ जाए, but so 42-year-old female है, bilateral cataract extraction है, implanted with a lens. ये premium lens है, तो all of these patients इसमें हम वैसे ही बहुत apprehensive होते हैं. तो एक हफ्ते के बाद comes with severe photophobia burning के साथ. उनको history ली तो she's waking up in the morning with a lot of pain, and that subsides during the day. So that should be a clue to what this case is exactly. तो अगर हम, so this is beyond OCT. So this is a placido disc image जिसमें हम breakup times देख रहे हैं basically. तो अगर आप देखें, there is points where the placido Myers are not meeting, and this is basically known as breakup of the tear film. तो ये एक ही जगह पे हो रही है अगर आप देखें. And then when we look at this is also at the same location. Then when we go to the next eye, the other eye, again very similar, and then breakups happening at the same place. Then we were going to the OCT. So आप देखें इसमें white on black and black on white दोनों है. This is a reference image. It's normal. Now when we go into the right eye, उसमें हम अगर जाते हैं, so white on black on white का हमें नजर आ रहा है. If you see there is irregularities in the movements there, ठीक है, छोटी-छोटी आपको gaps दिखेंगी और थोड़ी जगहों पे thickening दिखेगी. ठीक है. Then you look at the periphery, इसमें बहुत बाज़ आपको नजर आता है. Duplication इधर है, and then complete absence of movements there. तो इधर आपको in the other eye similar picture है. ठीक है. So what is this problem? This was recurrent erosion syndrome. She had some underlying dystrophy, जिसकी वजह से ये एक problem आया था. हमने bandage contact lenses देख के lubricants दिया इनको for about a month, and she was absolutely fine. ठीक है. All it was recurrent erosion syndrome. फिर इसका एक flip side case है, 25-year-old male, burning sensation in the left eye, again particular in the morning. So what are you thinking of? Again, you're thinking of recurrent erosion syndrome. Fingernail है, trauma भी है, so two risk factors of recurrent erosion syndrome आपके सामने ही. Because of these classical symptoms, he has had surgical removal of the epithelium about 3 to 4 times. PTK के साथ इनको कराया हुआ है, just to get that Bowman's layer to come back. So if you see the breakup time now, so ये breakup time so this is at the same time, we've taken it 3 times, but the breakups are occurring at different locations in this patient. So again, दूसरी eye, they're occurring at different locations. So, and then the epithelium, this is because of the trauma. So what is happening? इधर देखें, Bowman's layer बिल्कुल uniform है. There's absolutely no problem in the Bowman's layer. Now when we did mammography, so OCT ने क्या determine किया कि इसकी structure normal, it's not recurrent erosion syndrome. What it was meibomian gland dysfunction. उसकी वजह से इसको problem हो रहा था. So we were treating him for the wrong thing in that entire time. And OCT helped to determine that. And then when we see mammography, इसकी meibomian glands को हमें ठीक करना था. And we did it for about a month or 2, and he was much better after that. So we gave him severe memo. We gave him hot fomentation 3 times. Then we did heat therapy on his meibomians as well. We gave him omega-3 fatty acid capsules, उसकी diet optimized की, and he was much better after that. So that was a brief thing on anterior segment OCT. And अगर कोई सवाल है तो मुझे प्लीज बता दीजिए. और क्या कर सकते हैं हम anterior segment OCT? Anterior segment OCT जैसे presentation. Anterior segment OCT में बहुत चीजें. So for example, you can image the anterior surface of the iris, the AC. So uveitis में इसकी applications बढ़ रही हैं.
और हम नॉन इनवेसिव एंगल में ये बिल्कुल जैसे तो क्लोज्ड एंगल एंड ओपन एंगल। सॉरी, रेटिनोकोनस के अंदर कितनी रिलायबिलिटी इंटीरियर सेगमेंट ओसिटी? अच्छा देखो, anterior segment OCT is now being used as a replacement for topography. So basically topography is now being made on the concept of swept source OCT. So उसकी reliability is obviously more than your time field imaging, but अगर उसके अंदर topography का adapter है, but you can, the main thing of ये जो scans है इसमें keratoconus में hydrops, scarring, because when you have scarring you want to know what layer it is at, so you can do what kind of keratoplasty you want to plan for. So yes, it has applications beyond just the topography. Thank you. Thank you, Dr. Noman, for enlightening us with interior segment OCT. MashaAllah, young emergent Hashmani, the scientific mind being transferred to the new generation. तो ये ज्यादातर काम जो है ये डॉक्टर लाइबा आसिफ ने किया हुआ है और डॉक्टर अब्दुल्ला ने इन कंपाइलेशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन पे। तो जो हमने इसमें इमेजेस यूज किए हुए हैं ज्यादातर एक्विटी आई सेंटर के हमने डेटाबेस से लिए हैं और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी से हमने बहुत अच्छा एक इंस्ट्रक्शन कोर्स था उससे लिए हैं और रेटिना इमेज बैंक और entoki.com से। तो हमने शुरू में ही उन सबको एक्नॉलेज कर लिया और अगली दफा जब हम इसको करेंगे तो हाशमानीज इमेजेस विल आल्सो बी देयर और साथ एक खूबसूरत सी तस्वीर भी लगा देंगे हाशमानी साहब की। तो जैसे हमने डॉक्टर लाइबा आपसे क्लासिफाई कर रही थी कि हमने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है हमने। Starting from reliability check and artifacts, next we move on to, सबसे पहले हमने देखना है कि नॉर्मल क्या होता है और अब नॉर्मल क्या होता है। आपको नॉर्मल का पता होगा तो आप अब नॉर्मल पिक कर सकेंगे। तो देखना है कि where is the pathology, what is there a pathology, is there a pathology, what is the pathology, and is it hyperreflective or hyporeflective। फिर obviously clinical correlation और सारा फिर उसके बाद। इसी जमाने में सर्विसेज में वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा इत्मीनान फरमाते थे। तो पार्ट 2 में अभी मैं कर ही रहा था तो तभी से उन्होंने सारा वो टीचिंग का सेक्शन मेरे हवाले कर दिया हुआ था और उसके बाद तैयब साहब आए तो आई वाज एक्टिंग एज ऑल पीजी ट्रेनिंग एंड एफसीपीएस ट्रेनिंग वाज इन पोस्ट एफसीपीएस पीरियड आई वाज कंट्रोलिंग दैट। तो उस जमाने में ना बड़ा नया के स्टेशन आए थे और एफसीपीएस पार्ट 2 ट्रांजिशन में जा रहा था, डिजिटाइजेशन की और मॉडर्न हो रहा था। इनिशियल 3-4 ऑस्की उस जमाने में कंडक्ट हुए हैं। तो एफएफए, एमआरआई, सीटी स्कैन ये उस जमाने की चीजें थी, एक्सरेज ऑफ कोर्स। तो वहां मैं ना एक चीज वहां डिस्कस करता होता था कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की लैंग्वेज आती है जैसे डॉक्टर लाइबा ने बताया था तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कि आपको एक केस दे दिया जाता है, एक एक्सरे दे दिया जाता है, तो आप क्या बात करेंगे। एक्सरे और सीटी स्कैन की लैंग्वेज एक ही है, हाइपोडेंस, हाइपरडेंस। और मैं अपने साथियों को बताता होता था कि हाइपरडेंस चिट्टा, हाइपोडेंस काढ़ा। इसी तरह अगर आपको एमआरआई दे दिया जाता है तो एमआरआई की लैंग्वेज क्या है, इंटेंसिटी, हाइपर इंटेंस, हाइपो इंटेंस, हाइपर इंटेंस चिट्टा, हाइपो इंटेंस काढ़ा। फर्क सिर्फ ये है कि एमआरआई में T1 और T2 से रिवर्स हो जाता है, हाइपर इंटेंस और हाइपोटेंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं एमआरआई स्कैन पकड़ा दिया जाए तो आपने सबसे पहले देखना है T2 वेटेड इमेज है या T1 वेटेड इमेज है। सीटी स्कैन की भी हो गई, एफएफए की क्या लैंग्वेज है, कोई बताएगा रेजिडेंट? मे बी, लेकिन थोड़ा सा और जरा वाजे करें। फ्लोरिसेंस, हाइपर फ्लोरिसेंट, हाइपोफ्लोरिसेंट। हाइपर फ्लोरिसेंट चिट्टा चमकदार और हाइपोफ्लोरिसेंट काला डल। इसी तरह ओसीटी की लैंग्वेज हो गई क्या,
हाइपर रिफ्लेक्टिव, हाइपो रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिविटी। इस तरह आप बाई कर लेते हैं टाइम एग्जामिनर से। आप सिंपली बताना शुरू करते हैं कि सर देयर इज अ रेटिनल पैथोलॉजी, या सर आई एम लुकिंग एट एन ओसीटी स्कैन showing macular area, showing disc area, and the layers generally appears normal. There is a hyper reflective lesion in this scan. अभी तक आपने कोई एरर कमिट नहीं की और आपने कोई 30-40 सेकंड उससे बाय कर लिए हैं। अब आप मीनवाइल देख रहे हैं गौर से। जब आपने लेयर को कमिट करना है तो दैट्स द टाइम कि आप पहली एरर कमिट कर सकते हैं, इसलिए आप ये टाइम बाई कर रहे हैं वाइवा में। अब आप कहेंगे कि ये जो हाइपर रिफ्लेक्टिव या हाइपो रिफ्लेक्टिव लियन है ये किस लेयर में नजर आ रहा है मुझे। जब आपकी थिंकिंग प्रोसेस पीछे चल रही है, जब आपने लेयर भी आइडेंटिफाई कर ली है और उसकी रिफ्लेक्टिविटी भी आइडेंटिफाई कर ली है तो माशाल्लाह पढ़ा तो हुआ ही है। अब अगर शुरू में आप एट शॉक भी थे तो अब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 2 और 2 4 कर देगा। You should reach a diagnosis by that time. So this is how to address the investigation. तो अब कोई वॉलंटियर करें जल्दी से, वरना डॉक्टर लाइबा को तो मैंने पास ही खड़ा किया हुआ है। इसको एक्सप्लेन करें जल्दी। Just describe what you see. Anybody? चलो लाइबा करो। So इस स्कैन को जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑब्वियस सी पिक्चर नजर आ रही है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल फोबिया। तो द फोबियल कॉन्टूर इज नॉट नॉर्मल, इट हैज बीन डीपन्ड हियर। अगर आप इस पर गौर करें तो व्हाट इज दिस वाइट लाइन ओवर हियर? दिस वाइट लाइन इज पुलिंग दिस, ये सिंपली अल्फाज में इसको खींच रही है। यहाँ पे आ गई ये ट्रैक्शन। दिस वाइट लाइन इज एन एपीरेटिनल मेम्ब्रेन। This epiretinal membrane is causing traction on the retinal layers. And when we say the 4, ये 4 जो आपको बैंड्स मैंने बताए थे वो प्रेजेंट है। तो मेन जो पैथोलॉजी है वो यहाँ पे है सारी। ये इसको देखें आप। These ये जो स्मॉल ब्लैक है, ब्लैक आमतौर पर फ्लूइड होता है, ओसीटी की लैंग्वेज में डार्क। ये फ्लूइड, ये अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज नॉट अ फ्लूइड स्पेस, ये फ्लूइड नहीं है, इसमें एंटी वेजेफ का फायदा नहीं होगा। दिस इज ERM causing traction and this is a pseudo hole that it's causing. So, अभी आगे चलते हैं स्टेप वाइज, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है प्रेस करते हैं। तो फोबियल कॉन्टूर, डिस्टॉर्शन ऑफ द फोबिया। ठीक है, Any volunteer here? यहाँ पे आप प्लीज कोशिश कर लो। We are not going to insult anybody. No? उस तरह करो सवाल। So सबसे पहले आप देखें, is there a pathology? क्या ये नॉर्मल है? Is there a pathology? Yes. 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 Where is the pathology? जी अब्दुल्ला। Flattened है जी। फोबियल कंटूर फ्लैटेंड है और जी। membrane भी नजर आ रही है, hyper reflective है। इसका मतलब है कि जो विट्रियोरेटिनल इंटरफेस है Yes. पैथोलॉजी वहां पे है। तो व्हाट is it hyper reflective or hypo reflective? Hyper reflective है। Yes. What is it? Epiretinal membrane। So this is an epiretinal membrane. Next we आप अब्दुल्ला इधर आ जाएं। Let him go। इधर है, इधर जल्दी। So क्या ये जो मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस कह रहा था, this is an OCT scan showing which area? Macular area. What's the pathology? What's the pathology? Where is the pathology? Is there a pathology? Yes. Yes. Is there a pathology? So where is the pathology, anyone? So we can see there all of the retinal layers, all of the retinal layers are absent in this area. Outer retina is also absent. So it's where is the pathology we have identified? It's in the outer retina. In the central part, foveal part, and all the retinal layers are absent in the fovea. And there are cystic spaces also. And Nuclear layers.
These are the cystic spaces, as Dr. Laiba is saying. तो लेवल ऑफ पैथोलॉजी फोबिया डायग्नोसिस क्या हुआ? अब तो सारा कुछ कर दिया. Full thickness It's a macular true hole. macular hole, full thickness macular hole. So we have already differentiated between pseudo hole and a true hole. ये true hole है. और जब आपने true hole को देखना है तो जो सबसे important चीज है वो जरूरत ऑन करते हैं और फौरन ऑफ कर देते हैं पॉइंटर को. रेजिडेंट्स के लिए अभी सेशन शुरू होगा. पॉइंटर जब यूज करना है तो इस तरह वो चेयरमैन के मुंह पे नहीं डालना, उसको ऑन करना है और ऑफ कर देना है और एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करनी. राइट वहां शो करें और बस. जिंदगी क्या है? एक नस, टस से मस और बस. स्टेज 4 फुल थिकनेस मैकुलर होल है. So it's a brief talk on macular holes के उनकी staging किस तरह करते हैं हम. जी क्या सवाल है? Where is the pathology? Is there a Is there a pathology? pathology? Yes. Yes, it is. Where is the pathology? Macular area. Macular area में which layers appear to be involved? ये क्या है? ये एरिया क्या है? विट्रियस है ये. तो ये एरिया क्या है? तो इन दोनों के मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? जहां विट्रियस का विसाल होता है रेटिना से, विट्रियो रेटिनल इंटरफेस. विसाल है विट्रियस विद रेटिना. तो विट्रियो रेटिनल इंटरफेस पे है ये मसला चल रहा है. क्या है ये? ये मैकुला है, ये विट्रियस है. तो दोनों मिलेंगे तो लफ्ज क्या यूज करेंगे? विट्रियो मैक्यूलर. तो जब विट्रियस मैकुला को खींचेगा तो क्या इजाफा करेंगे साथ? ट्रैक्शन. तो दिस इज विट्रियो मैकुलर ट्रैक्शन. क्या कर रही है ये? फोबिया को उठा दिया उसने. तो ये विट्रियो वीएमटी कहते हैं इसको. ठीक है? Any questions about this? नुमान आपके बोलने पे पाबंदी तो नहीं है. You are sitting as an expert here. Add something. कुछ मसाला डालो, कुछ फ्लेवर डालो. हाँ नेक्स्ट भी करते हैं. जी नुमान की बारी है. ये तो डायग्नोसिस बता दिया. रेजिडेंट्स बैठे हुए हैं. निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं. तो हमने ना आसान किया ना. इज देयर अ पैथोलॉजी? देयर इज अ पैथोलॉजी. वेयर इज द पैथोलॉजी? मैकुला. कौन सी अब लेयर्स इन्वॉल्व लग रही हैं? सारी. और जो इंटरेस्टिंग चीज है कि विट्रियस तो कम आता है ना ओसीटी में. तो अगर वो नुमाया होता है किसी वजह से तो उसको फोकस करना पड़ेगा. विट्रियो और रेटिनल इंटरफेस इसमें लग रहा है कुछ कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपको ये ट्रैक्शन नजर आ रही है. ये भी वही है. फुल थिकनेस मैकुलर होल. ये बस इसकी स्टेज 3 है कि इसमें अगर 400 माइक्रॉन्स होगा लेकिन इनकम्प्लीट है पीवीडी. पीवीडी इज पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट. अच्छा यार आप ऐड करना था तो आप ये फॉर द एग्जाम be very careful using the term incomplete PVD. So certain examiners do not like incomplete PVD. They say कि या तो PVD है या तो PVD नहीं. So if you're thinking this is an incomplete PVD, be safe in the exam and say if there's no PVD. Complete कोई आंसर. ठीक है. Thank you. Perfect. Thank you. So where is the pathology now? Anyone? Macular area में है pathology.
जी और आप देख सकते हैं कि इसमें so level of the pathology is at macula. So there is a break in the inner fovea with irregular contour. You can see और that. ये जो डॉक्टर लाइबा ने पॉइंट किया था, ये उभार क्या है, ये वाला, ये कौन सी लेयर है? Outer nuclear layer है ये। और क्या हमने नॉर्मल ओसीटी में क्या डिस्कस किया था कि आउटर न्यूक्लियर लेयर फोविया के नीचे थिक होती है, सबसे थिक होती है। याद रखना है, क्योंकि ये ईआरएम वगैरह में बहुत कंफ्यूज करता है। और सूडो मैकुलर होल को डिफरेंशिएट करने में ये लेयर बुनियादी किरदार अदा करती है, ये थिक होती है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी लेयर्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर और उसके नीचे क्या होती है, वो जो फोर हाइपर रिफ्लेक्टिव बैंड्स लिप्साइड जोन, वो सारा कुछ ठीक है, सारी लेयर्स इंटैक्ट हैं। ये सारा हम बता चुके हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म। डायग्नोसिस व्हाट्स द डायग्नोसिस? इट्स अ लैमेलर होल। ये पार्शियल थिकनेस पुराने जमाने का और आजकल का लैमेलर होल। जहां भी हाशम अली साहब या प्रोफेसर दाऊद साहब हमारे शफीक उस्तादों के उस्ताद बैठे हैं और वासिफ साहब की माशाल्लाह खुशबू आती है हमें इनसे, तो जहां भी सर कोई चीज ऐड करना चाहें तो यू आर फ्री, हमें कोई बाइंडिंग नहीं है, जितना कर सकेंगे करेंगे। झगड़ा क़यामत तक गया है जुर्म हस्ती का, जरा सी बात थी लेकिन कहां तक बात पहुंची है। तो ये चलती रहेगी टीचिंग और लर्निंग, लेकिन हम आपसे मुस्तफीद होना चाहते हैं। जी So where is the pathology? Level of pathology. First of all, we have to identify that. So level of the pathology is that we can see the vitreoretinal interface is not normal. First of all, we have to identify the abnormal. So the abnormal thing is that vitreoretinal interface is not normal, and the macula has been उसके ऊपर ट्रैक्शन कॉज कर रहा है वो। तो हाईलाइट जो है इन एडहियन के ऊपर जो है वो थिकंड है और वो टेंटेड है जिस तरह, और उसके अंदर ये फ्लूइड स्पेसेस हमें नजर आ रही हैं। सो द डायग्नोसिस इन दिस केस इज विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन सिंड्रोम। तो आप देखें कितना खौफनाक लग रहा है, लेकिन ये है वीएमटी सिंड्रोम, ये सारा उसी का शाखसाना है कि खैर नाल पीवीडी नहीं हुई, तो इट एंडेड अप लाइक दैट। सो दैट्स आवर ओन केस ऑफ अ पेशेंट। इधर भी आप देख सकते हैं कि दिस इज विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन, कि वो उसको लिफ्ट कर रहा है मैकुला को। जो गौर करने की चीज है वही है, यहाँ से इंटैक्ट है, और जब आउटर न्यूक्लियर लेयर और लिप्साइड जोन अच्छी हैं तो विजुअल प्रोग्नोसिस इज गुड, लिप्साइड जोन डैमेज है तो विजुअल प्रोग्नोसिस इज पुअर। सो वी हैव डिस्कस्ड द आउटर रेटिना, वी विल कम टू द इनर रेटिना। अब ये आप इसके, सो वेयर इज द पैथोलॉजी? लेवल ऑफ पैथोलॉजी, इट्स इन द इनर रेटिना, मिडल रेटिना, इनर रेटिना, और इसके अंदर जो है वो हाइपर रिफ्लेक्टिव वो डॉट्स लाइक आपको नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स हाइपर रिफ्लेक्टिव हैं फोसाई हैं, उसके इर्द-गिर्द डल या ब्लैकिश एरिया है, डल जेट ब्लैक भी कह सकते हैं। जो जेट ब्लैक अपीयरेंस होती है वो फ्लूइड की होती है। सो एक्सुडेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डायबिटिक मैकुलर एडीमा, उसके गिर्द जो है वो फ्लूइड है, और मैसिव डायबिटिक मैकुलर एडीमा है। जो हार्ड एक्सुडेट्स हैं दे विल शाइन। यस नुमान जी प्लीज माइक देना है। बिकॉज़ ओसीटी हम लोग कभी-कभार इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, ओसीटी इज जस्ट एज एन इंडिविजुअल टेस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, so we start interpreting OCT as an individual test, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये OCT का जो भी लेयर है, जो भी आप देख रहे हो, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल टेस्ट, उसका डायग्नोसिस विल डिपेंड ऑन द पेशेंट। सो फॉर एग्जांपल, सो क्लिनिकल कोरिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन इन केसेस ऑफ बीएमटी, और अगर आप इसमें जाते हो डीएमई। सो इसमें डीएमई हमने क्यों डायग्नोस किया? बिकॉज वी नो कि द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, बट दिस सेम पिक्चर आपको दूसरे केसेस में भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यूवेइटिस में ये केस आपको मिल सकता है। You can find it in a lot of other pathologies. So please, clinical correlation बहुत जरूरी है to optimize आप क्या ट्रीटमेंट दोगे उसको। थैंक यू। बहुत अच्छा इनपुट दिया सर ने कि इनके साथ क्लिनिकल सिनेरियो भी जरूरी है। इस साइन का नाम क्या है? जो बताएगा इसको एंड में 500 रुपया दूंगा।
और फोटो के साथ। नुमान के अलावा एक्सपर्ट्स ने नहीं बताया। बच्चों में से कोई बताए? चलो ये नाम थोड़ा सा कम कर देते हैं और अब रिस्क ले लेते हैं, नुमान और अब्दुल्ला और लाइबा का भी। आप तो बनाने वाली हो, आपको तो 10 रुपए मिलेंगे। पर्ल नेकलेस साइन कहते हैं इसको। ये पर्ल नेकलेस ये एक्चुअली मोती, ये जो राउंड है। और बहरहाल हम इसको पहले सिस्टमेटिकली उसी तरह लेके चलते हैं। बस साइन है, किसमें होता है? but there are variety of other conditions जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा क्लिनिकल कोरिलेशन आपको चाहिए। तो क्यों पैदा होता है? बिकॉज ऑफ exudates lying the cystic space और वो एक्सुडेट्स जो चमक रहे होते हैं, इर्द गिर्द सिस्टिक स्पेसेस होते हैं, तो उससे वो मोतियों की और हार की अपीयरेंस बनती है। ऐसे गोल सा बाल का कि बड़ा ही क्लासिकल होता है, बिल्कुल ऐसे वो नेकलेस के अंदर जो गोल से मोती की तरह नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये राउंड एक ये और ये सारा पर्ल नेकलेस साइन है। और ऊपर वो वीएमटी भी नजर आ रही है विट्रियस के नहीं। अच्छा जी, ये एक अच्छा पॉइंट है कि देयर इज अ न्यू टर्म इन एक दो साल से कि विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन तो हम बात करते हैं, बट बिकॉज डायबिटीज क्या है, इट्स एन इन्फ्लेम्ड है, तो उसमें क्या डेवलप होगा, एडहेजन्स डेवलप होंगे। तो इसकी जो फोविया है इस पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, बिकॉज दिस कुड बी अ विट्रोमैक्युलर एडहेजन जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ट्रैक्शनल आरडी की बात ठीक है। ये जो सेंटर में जो मैक्युला तुम्हें दिखता था ना, वो एडहेजन है। ये पेशेंट डायबिटिक है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस प्रॉब्लम को? उसी तरह फ्लो चार्ट भी हम चलते हैं। तो इसके अंदर अब आप बताएं कि पैथोलॉजी किधर है। अब ये हाइपर रिफ्लेक्टिव है जो मैकुला के। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले वही उसी हम अपने पे चलते हैं कि इज देयर अ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी ऑब्वियसली है। वेयर इज द पैथोलॉजी? दिस पैथोलॉजी इज लाइंग अगेन एट द विट्रोमैकुलर इंटरफेस। बट इसमें अगर आप देखें तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, वेयर आर द लेयर्स? These layers are not visible because of the shadowing effect of this, whatever this is. So as I already said, the patient is diabetic. This is a bunch of neovascularization that is growing into the vitreous, and these vessels are causing shadowing here, because of which we cannot see the layers here. This is a case of proliferative diabetic retinopathy. This is an image taken from American Academy of Ophthalmology. अच्छा, आप ही से एक सवाल है कि ये जो न्यू वेसल्स डेवलप हो रही हैं, ये उस तरफ क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ इधर क्यों हो रही है? सर probably we captured, मतलब जो इमेज थी उसमें सेक्शन। लुक एट दैट साइड ऑफ द इमेज, एक फाइंडिंग उधर है, ठीक है। सो बेसिकली जो पीडीआर है उसको एक स्कैफोल्ड चाहिए होता है अगर वो विट्रेस में जा रहा होता है, तो उस तरफ स्कैफोल्ड मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव पीडीआर ऑन द। तो स्कैफोल्ड का अगर कोई बच्चा उर्दू तर्जुमा मुझे बताए और उसकी वजाहत करे कि क्या होता है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? ये देखो ना, अगर मेरे पास मैं कहूं कि इसको खींचना है तो इसको ऐसे खींचना है जोर से, मुश्किल है। अगर मैं इधर कोई कुंडा लगा हो उसको भी पकड़ लूं और फिर खींचूं तो मुझे उसकी सपोर्ट मिल गई है सॉलिड वॉल की, अब मैं खींच सकता हूं उसको। दिस इज स्कैफोल्डिंग। अगर सर चटनी है जैसे उसको स्कैफोल्ड मिलता है, कोई सपोर्ट मिलता है, एक सॉलिड सहारा। जब कोई विट्रियस मैकुलर ट्रैक्शन दोनों तरफ अटैच होगी, कॉर्टिकल विट्रियस पे भी उसकी अटैचमेंट है, फोविया पे भी है, तो स्कैफोल्ड बना हुआ है। एक तरफ से वो डिटैच हो गई तो स्कैफोल्डिंग इफेक्ट खत्म हो गया। थैंक यू नोमान फॉर पॉइंटिंग आउट। नेक्स्ट। So is there a pathology? Yes, there is a pathology. तो बच्चा डायग्नोसिस होता है and get the price. So the level of pathology here, that this over here the retinal layers are not discernible. I will briefly give you a clinical history of this patient. This patient recently had an attack of stroke and came to us with a sudden loss of vision. Can anybody tell the diagnosis now? CRAO. This over here is the retinal layers
are edematous over here. They are not Retinal different. edema है massive because of central retinal artery occlusion. So clinical correlation, we saw a cherry red spot in the patient's retina, and hence the diagnosis was central retinal artery occlusion of the patient. इसके अंदर बस थोड़ी सी एडिशन है कि मैं देख चुका हूँ पेशेंट इस तरह का ना, ये चेरी रेड स्पॉट सिर्फ एक्यूटली प्रेजेंट होता है, बाद में कई बार नहीं भी नजर आता। बिल्कुल। So that's why वो ओसीटी के ऊपर आप कर सकते हैं कि ओल्ड सीआर और आमतौर पर वो इतने होपलेस केस होते हैं ये आर्टेरियल ओक्लूजन, तो आपको ओसीटी कम देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में आ जाए तो डोंट लेट इट गो, यू शुड बी एबल टू पिक दिस diffuse massive retinal swelling because of arterial occlusion. So there is a scan. Is there pathology? So again, पहले डॉक्टर नुमान ने बात की थी कि clinical correlation is important. So I'll give a brief history of this patient. This patient has a sudden decrease in vision. So this over here, we can again see the cystic spaces in the retina. The other eye of the patient was normal and patient was not diabetic. So but now, is this DME or not? It's not diabetic macular edema. We simply जैसे हम कहते हैं कि cystoid macular edema, लेकिन उसकी वजह डायबिटीज नहीं है इस केस में। इस केस के अंदर डायग्नोसिस इज अ रेटिनल वेन ओक्लूजन। अगेन जब हम फंडस देखेंगे तो उसके ऊपर जो अपीयरेंस होगी हेमरेजेस, वो इसके साथ क्लिनिकली कोरिलेट करेगा। नेक्स्ट, the same scenario, there are cystoid macular edema, but the key history in this patient was that the patient had cataract surgery. So which led us to the diagnosis that this was because of Irvine gas syndrome, which is post cataract surgery cystoid macular edema. Moving on to the next case, can anybody tell me what is this? This was a case of decreasing vision in a 22-year-old boy with two brothers having the same condition. तो इससे हमें थोड़ी हिंट मिल रही है कि ये कोई चीज जेनेटिक हो सकती है। फैमिलियल है कुछ, और खास चीज इसमें जो नोट हिंट जो है वो सेप्टिक था। ये देखें, ये पिछले ओसीटीज में किसी में इस तरह के आपको नजर आए हैं? ये जो सेप्टिक बने हुए हैं, ये जो कनेक्टिंग बैंड्स हैं, ये खास चीज है इस ओसीटी की। और इसमें आम मतलब लेबल कर सकते हैं कि कोई इसको सिस्टर्ड मैकुलर एडिमा लेबल करके एंटी वेजेस स्टार्ट करके कर दे, लेकिन दिस इज नॉट द केस हियर। दिस इज अ पेशेंट ऑफ एक्स-लिंक्ड रेटिनोस्टाइसिस, और ये बहुत ही क्लासिकल है। मेरा डायग्नोसिस दोबारा बताइए, पहले वाली ये उसी वही है, ये वही है सर। ये देखें, अब इसमें अगर आप देखें तो डिस्ट्रप्शंस ऑफ इलिप्सॉइड जोन, तो पहले हमने बात की कि इलिप्सॉइड जोन की डिस्ट्रप्शन होती है तो विजुअल आउटकम्स आर पुअर। दिस वाज अ केस ऑफ एक्स-लिंक्ड रेटिनोस्टाइसिस, दीस आर नॉट फ्लूइड स्पेसेस। स्काइसिस का लफ्ज भी स्कैफोल्डिंग तरह याद रखें, अंग्रेजी का लफ्ज है ये। सेपरेशन वो पूरी ना हो, अधूरी सेपरेशन, कि कुछ सेप्टी अटैच हैं, कुछ अलग हो गए हैं, खिंचाव है। और ये मायोपिक रेटिनोस्काइसिस भी होती है, फोवियल स्काइसिस की एक टर्म भी यूज होती है, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की तरह दीस थिंग्स आर डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड मोर काइंड ऑफ रॉयल कॉलेजेस एग्जामिनेशन थिंग्स हैं ये। स्कीसिस में भी देयर आर टू टाइप्स। तो एक तो ये है जैसे कि आपकी जो ये लेयर पे एक और स्कीसिस आती है जो आरएनएफ होती है। So this is a case study. Can anybody tell where is the pathology and what is these blue arrows? Here you can see these blue arrows. This is also schisis of the layers. This over here is not fluid. This is also schisis, and this bright layer is epiretinal membrane again. So this epiretinal membrane is causing traction. ये इसको यहाँ से खींच रही है और ऐसे रेटिना यहाँ से उठ रहा है और स्काइसिस कैविटीज बन रही है। So this was a case taken from American Academy of Ophthalmology, and they said that the fluid cavities are rounder and the schisis cavities are not that much round. This is a case of myopic schisis that I took from Dr. Hamad Nasti. This was ये हमारा गायबाना उस्ताद है ट्विटर पे, हमाद नास्ती फ्रॉम आजाद कश्मीर, इस तरह की खूबसूरतियां लगाता रहता है और हम कैप्चर करते रहते हैं स्काइसिस को शो करने के लिए। दिस इज द केस ऑफ मायोपिक स्काइसिस, दिस पेशेंट वाज अ हाई मायोप। तो ये ब्यूटीफुली कैप्चर हुआ हुआ है यहां पे डिस्प्ले। अच्छा, मायोपिक स्काइसिस जो होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नीड टू नो द कंटूर ऑफ द आई। तो फॉर एग्जांपल इसमें तो
a very smooth contour, but sometimes there's a Staphloma होता posterior है। staphloma होता है। U shape बन जाता तो उसकी वजह से because the ILM जो है वो it's not elastic. So basically what happens is that schisis is happening not because of any ERM or anything, it's happening because the ILM has itself pulled the retina and causes schisis. अच्छा, हमारे जो इस सेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं कितने आए हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? 2 ही हैं। तो क्या टॉपिक है आपका? सर 2 टॉपिक्स हैं, एक बायोमेट्री पे है, एक ओसीटी पे है। और आपका? आपका क्या टाइम है टॉपिक का? आपका? सर 9:30 and 9:50। 9:30 and 9:50. So you will do both of your topics together. Sure. And we will call you at 9:45. चलो जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं। तो आगे ये मायोपिक रेटिनोस्काइसिस का देखें। और माशाल्लाह हमारी जो मीटिंग्स होती है ना, we are happy कि स्पीकर नहीं आए टाइम पर मिल गए। सर हम चले जाते हैं। इंटरनेशनली वो फाइन करते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं स्पीकर के ना आने को। So this is a clinical image of the fundus. Can anybody show what we are saying? Can anybody tell me what is happening over here? जी यहाँ पे ये बिल्कुल, और इसके अलावा अब मैं अगर हूँ ना, मैं कहूँगा कि this is a fundus photograph showing the image of the posterior pole and centering on the optic disc and macula. And the optic disc is generally pink, but there is some pale and kind of alteration in the color and contour going on temporal part of the disc, and there appears a peripapillary atrophy as well, and the retina appears edematous. I would like to further investigate this patient. So this is how you buy time. This is how you entangle the examiner. Then the examiners love it. कि आप उनको ऊपर से, वो तो आपको कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें घेरता हूँ। They love it कि ये बच्चा जानता है, इसको थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, इसने सारी फाइंडिंग्स पिक कर ली हैं, अब डायग्नोसिस रह गया तो वो 1-2 नंबर काटेगा, नरम हो जाए। तो ये OCT करवाया था पेशेंट का, तो अब OCT पे can anybody explain the findings? Again we are seeing here, this is the schisis of the inner layer and this is schisis over here of the outer layer. और यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑप्टिक नर्व को देखें तो there is a pit over here that has been excellently documented on this OCT. So this is a case of optic disc pit. जो पिछली इमेज थी वो इस ये उसका OCT है, optic disc pit maculopathy. Next, moving on to the next case, is there a pathology? Or this was a 76-year-old patient with progressively decreasing vision. So what is the level of pathology over here? You can see at the fovea there is thinning of the retinal layers. Retinal layers यहाँ पे नहीं है, और ये एक ट्यूबुलेशन पड़ी हुई है outer, इसको बोलते हैं outer retinal tubulation. इसमें होता क्या है कि photoreceptor rearrangement हो जाती है after retinal injury in a tubular manner. So यहाँ पे अगर आप देखें तो there is disruption of the outer, जो 4 बैंड हमने peripheral retina में नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये fovea के एरिया पे नहीं है. So this is a 76-year-old patient with progressively decreasing vision. So this is a case of age-related macular degeneration. अब हम मूव करते हैं pathologies of the outer retinal layers के ऊपर. This is a 64-year-old female that came to us for an eye exam. So we did the clinical examination and the OCT of the patient. Can anybody name where is the pathology? RPE. Yes, it is beneath the RPE. Here you can see. So beneath the RPE, these are the lipoprotein deposits which are drusen. These are drusen that are present between Bruch's membrane and RPE. Here you can see. This patient did not have any decreased vision. These were the drusen present, and I just wanted to show this OCT to you, that how drusen look on OCT. Next is the next case. We move on here. So is there a pathology? Yes, there of course is a pathology that is intraretinal, as well as here you can see
ये कोरॉइड और ये आउटर रेटिना की लेयर पे कुछ हो रहा है। यस, अब ये ब्राइट हाइपर रिफ्लेक्टिव चीज क्या है? हाइपर रिफ्लेक्टिव है, सब आरपीई है। सो फंडस एग्जामिनेशन पे दिस पेशेंट को जब हमने देखा तो दिस पेशेंट हैड कोरोइडल नियोवास्कुलराइजेशन, जो कि पीछे हमने देखा ये ब्राइट हाइपर रिफ्लेक्टिव है, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड जोन, आरपीई ये इरेगुलर है, as well as there is a fluid cyst present over here. This is a case of choroidal neovascularization. यहाँ पे देखें this hyper reflective चीज, ये hyper reflective, this is a bleed over here. So this is a CMV with fresh bleed. This you can see that there is exudative detachment over here. यहाँ से exudative जो fluid है वो subretinal level के ऊपर आ रहा है ये, and there is disruption. So अच्छा ये case जरा interesting है. So this is a case of here you can see anybody can confuse it with CSR. What is this dome shape elevation over here? ये dome क्या है? अच्छा इसको जब हमने fundus examination की तो this patient has had a sub RPE lesion. So what lesion could that be? This. That lesion was pigmented. Pigmented lesion था fundus examination पे. जब OCT किया, so this is a choroidal mass. It's pigmented, so it can be a choroidal nevus or a choroidal melanoma that is causing this exudation of the fluid over here. और यहाँ पे ये जो hyper reflective foci हैं, वो उसकी chronicity को show कर रहे हैं. That these are drusen. This is another case with similar dome shape elevation. This patient had tuberculosis. इस पेशेंट को टीबी था और she had progressively decreasing vision and a bright lesion was seen on the fundus examination infratemporally. जब हमने उसका OCT किया, then ये हमने देखा कि पेशेंट को टीबी था, उसके अलावा लीजन जो था वो सब RPE लेवल पे पड़ा हुआ था. OCT पे there is a dome shape elevation over here with exudation of the fluid. So मतलब हमें जो diagnosis इसका लगा that was a choroidal tuberculoma here. This is an inflammatory process. Tuberculoma है ये. This ये regular नहीं है जो contour होना चाहिए था, यहाँ से ये elevation हुई है, ये भी एक choroidal mass है. बाकी clinical history और correlation करेंगे तो हम diagnosis की तरफ जाएंगे. Next, this is a case, our most favorite CSR. So यहाँ पे आप देखें ये छोटा सा PED pigment epithelial detachment पड़ी हुई है ये, this over here. And this is a subretinal fluid. This patient was on steroids and had asthma and came to us with decreased vision progressing over the last 1 to 2 months. So OCT पे we had CSR में हम उसको परेशान भी होते हैं, बड़ी ट्राइयां करते हैं, कभी एफएलआर देते हैं, कभी रिफेम्पिसिन देते हैं. एक चीज याद रखनी है आपने, स्टीरॉयड कभी नहीं देना CSR में. एक और हिस्ट्री में स्टीरॉयड स्किन ऑइंटमेंट भी पूछनी है कि कहीं बीटा मेथासोन स्किन पे तो नहीं लगा रहे आप. हर सूरत में उस पेशेंट्स को स्टीरॉयड से दूर करें, तब उसकी CSR ठीक होगी. तो स्टीरॉयड बहुत मेजर रोल प्ले करता है CSR में. So this is CSR. Next is a case. This was a case of a 56-year-old female that came to us with progressive decrease in vision. On OCT we saw a dome shape elevation. This dome यहाँ पे अगर आप देखें तो RPE भी उठी हुई है. So this is pigment epithelial detachment और उसके PED large serous PED. इसके ऊपर चलें. Next, time हमारे पास short है. So this over here you can see that the retinal मतलब outer retina पे आप देखें तो ये folds हैं. These folds ऐसे लग जब एक चीज बड़ी पड़ी होगी उसके ऊपर अगर हम एक शॉपर चलाएं तो शॉपर दूसरी साइड से क्रिंकल हो जाएगा. इसको इमेजिन करें तो इसका मतलब कि there is some lesion present in the retina there which is causing this wrinkling of the all of the layers of retina. So this was a picture taken from American Academy of Ophthalmology. And this was a case of choroidal folds. इसमें important ये है कि पेशेंट का B स्कैन किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कोई मैस लीजन तो नहीं प्रेजेंट जो कि ये रिंकलिंग करवा रहा है. Next, moving on to the next. This patient had rheumatoid arthritis and had been taking hydroxy HCQ for the last 10 years and presented to us with decreasing vision. This is the fundus photograph of the patient. Anybody tell what this is?
This is the bullseye maculopathy. So this is the flying saucer sign of the planical maculopathy. इसके अगर हम Lacunar maculopathy, flying saucer sign. ये Head. हेड या फ्लाइंग सॉसर या ये देखें ये फ्लाइंग सॉसर सा बन गया है और यहाँ पे इधर अगर आप देखें तो देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिफोवियल एंड पैराफोवियल ईएलएम लिप्सॉइड जोन एंड द न्यूक्लियर लेयर्स एज वेल सो दिस इज द फ्लाइंग सॉसर साइन सीन इन प्लानिकल मैकुलोपैथी दिल तो चाहता है आप बैठे रहे हम बोलते रहे आप सुनते रहे बट औरों को भी हक है आए आप ये सेशन फिर इंशाल्लाह हाँ इट विल कंटिन्यू झगड़ा क़यामत तक गया है जुर्म ओसीटी का जरा सी बात थी लेकिन कहाँ तक बात पहुंची है आप नाम बताएं प्लीज इनकी प्रेजेंटेशन अपलोड की जाए और हमारी ऑफलोड की जाए थैंक यू सो मच थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर using optical coherence tomography. So OCT saga continues. Please enjoy. Now. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sahri Shahid, and I'm from College of Ophthalmology and Allied Vision Sciences. I have done this research project recently in the presence of Dr. Sulin Server. Sir ने already topic तो आपको elaborate कर दिया है कि क्या है. Here is the disclaimer that this research was purely for academic purpose and there was no commercial values. Here I have mentioned a brief about the dry eye disease, what happens in the dry eye, that it's a multifactorial disease and there is a loss of tear film. The patient will feel irritation, redness, watery discharge, and photophobia. Other than this, the dry eye patients face a lot of problems that affect their normal happy life. The etiology was the tear film instability, traumas, and inflammations. Here I have discussed a little about the literature review, sorry. Previously, the work done by National Eye Institute, they have said that the insufficient tear film damage Here, a study I have mentioned that National Eye Institute, they said that insufficient tear film damage the palpebral area of eye and causes the people to enjoy their normal life. A study conducted in US, they concluded that 1.68 million people in US
were having dry eye, and 73.6 were females, and 26.4 were male. A large number of female was the reason because they were using cosmetical things, and that was the biggest cause of dry eye in US research. Further, Larker, he have done his research with his co-workers, and he concluded that corneal epithelium supports the tear film and it protects the underlying contents. Jung have also done research on anterior chamber OCT. He uses anterior chamber OCT, and he concluded that 20 to 30 glands were in the lower eyelid, and 25 to 40 glands were in the upper eyelid. And if the number of glands were decreasing, that was causing meibomian gland dysfunctioning, and such patients were feeling the illness of eye. Here, the objective of my study that was to correlate the corneal epithelial thickness, tear film height, and meibomian gland morphology in the dry eye patients using anterior segment OCT. The study design of my work was correlation study. The place was New Hospital, Lahore. The duration of study was 6 months after approval of synopsis. The sample size was 70 eyes. The sampling technique was non-probability convenient sampling, and the formula used was Pearson and Spearman. OCT in dry eye measures these three basic parameters that tell us about the dry eye, that includes the tear film height, meibomian gland, and corneal epithelium. Here is how to measure the tear film height. You have to locate this area, and you will measure the tear film height over here. Here you can take the different measures, and you can check the normal like you will measure the height of the tear film, and you can compare it with the normal tear film. Here you can see there is a height. This is the tear film. This is the case of dry eye, and there was no tear found in the OCT. Further, we measure the corneal epithelium. This is the whole cornea, and this is the corneal epithelium. We can measure the corneal epithelium from anywhere, like you can measure it from the central area or from the peripheral area. And further, you can compare it with the normalities. Here, how to see the meibomian gland. You have to avoid the lid, upper lid and lower lid, and you have to take a snap of that. And here you can see this is a normal meibomian gland. Here is the dystrophies. Their glands are missing. And here again, you can see the meibomian gland, and you can rule out either the glands are complete in number or either they are having dystrophies. After doing all the patients, all the 70 patients, we concluded that Pearson correlation said that corneal epithelium and tear film height have p-value of 0.289, and Spearman between corneal epithelium and meibomian gland was 0.417. And the Spearman between corneal epithelium and meibomian gland was having p-value 0.648. Here is a graphical presentation. You can see the tear film over here on y-axis. You can see the corneal epithelium on x-axis, and this is color presentation of all these three parameters. So we concluded that there is negative correlation between corneal epithelium and tear film. That means that if one was increasing, the other was decreasing. And there was a weak correlation between corneal epithelium and meibomian gland, that these two parameters were not affecting each other a lot. And the correlation between tear film and meibomian gland was moderate. Further, it was recommended that to increase the sample size can bring different results, and if you can compare the different age groups, that can also bring different results. The same between rural or urban areas, because most of my patients were from urban area and all were screen users. So we can do the same study with rural area or urban area, or with the screen users or non-screen users. If you have any query for that research, you can ask. So here is my other research work that was about biometry. That was also conducted in the presence of Professor Dr. Suhail Server, and I used non-contact hex striate biometer for this research.
Biometry is the most common procedure done in every eye hospital, especially in cases of cataract surgery. And a perfect biometry should be done for the best result, post-operative results, and to avoid any refractive, you can say any fluctuation in the refractive status of the patient. There are several types to perform biometry that includes contact methods or non-contact methods, and obviously the non-contact method were more fine because of the patient comfort and decrease of several risk factors. Here I have discussed few of the studies that have been done previously. Andrea concluded that um, repeatability of in with non-contact biometer of axial length, interior chamber depth, and here are also two studies that have already been done on different parameters of eye. The objective of my study was to check the inter-observer reproducibility of axial ocular measurements with non-contact Higgs striate biometer. These were the parameters I have measured that include axial length, central cornea thickness, anterior chamber depth, lens thickness, anterior chamber depth, and vitreous length. As it was an inter study, inter class 3 or इसमें inter observer said, so the one observer was undergraduate and the other observer was postgraduate. The study design was comparative reproducibility analytical study, and the sampling technique was non-probability convenient sampling. The formula used for this study was Cohen's kappa. Here you can see the Cohen's kappa, and we have the sample size of 60 patients. That means 120 eyes. After collecting the data, we concluded that axial length of observer 1 was having values falling in these ranges, and the observer 2 having axial length values with these ranges, and that was the average measurements. Here, all the parameters are discussed. This is the graphical presentation, and you can see all these parameters of observer 1 and observer 2 were falling with the same range, just as then very few of the patients. That will make you master of OCT. So we concluded that non-contact Higgs striate biometer has high inter-observer reproducibility with strong inter-class coefficient, and we recommended that increasing sample size can bring some different results. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Sahib. Excellent presentation. Thank you so much. And doing it in time. Thank you, sir. Who is next? Please. आपका नाम है? Ulfat Anjum. Clinical features of patients needed more than one time photorefractive keratectomy. फिर diagnostic में बता दिया गया. For International University, for International University working as a lecturer of optometry. My topic is clinical features of patients needed more than one time photoreceptive keratectomy. As you all of know that photoreceptive keratectomy is the ablative procedure to correct refractive errors by ablating corneal stroma. So prevalence and incidence of all you can say of ophthalmology of PRK. There is no global estimate of how many patients have gone for laser refractive surgery, but some studies have shown that which was started in 2015 that in 2021 0.8 million people have gone for refractive surgery. So in 2010, the rate of the primer laser refractive surgery in Iran was 2,764 per million population, which in 12 increased to 3,744 per million. So why this study is important? Just to establish the patient profile and to check the clinical features. Is there any difference in the clinical features of the patients who went for refractive surgery more than one time? So my objective of the study was to evaluate and compare the patients who had clinical, who had PRK surgery at one time and those comparing it with the group of the people who had refractive surgery more than one time.
So a literature review, Rachel Pacroy found that high astigmatism and transepithelial PRK were highly associated with the high myopic PRK retreatments, and Bradley, Randleman et al. Found no significant correlation between degree of myopia and retreatments, but eyes with the pre-operative astigmatism and hyperopia greater than 1 diopter were more likely to undergo retreatments, and these not influenced by age or gender. So, refractive correction higher than 5 diopter is one of the strong predictions of regression. Crystal And eight. Hashmi et al. Found that keratometry readings are significantly higher in Iran myopic population than hyperopic Iranian population. So, my methodology was a historical cohort study. Inclusion criteria was patients who have underwent photorefractive keratectomy previously and age between 18 years to 60 years, and we have excluded those patients who went for any other surgery, and if they had any previous surgery other than photorefractive keratectomy. So sample location was Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran, and sampling we added the data from 2015 to September 2022. So these were the basic instruments that have been used for the study, and we actually in the procedure we divided into two groups. Data was divided into two groups. One was who needed refractive, who went for only one time refractive surgery, and the other one was who went for more than one time photorefractive keratectomy in Farabi Eye Hospital, Tehran. So results were data of the total 48 patients included 17 participants were those who managed to reach more than one time photorefractive keratectomy, and 31 participants who were managed with only one time photorefractive keratectomy. So comparing the age and refraction components, we found that there is significant difference between subjective spherical refraction and subjective astigmatic refraction with the confidence interval of 95%. And this comparison of objective refraction components have shown that there is clinically significant difference between objective spherical refraction, which was taken by objective tools. So we included the pentacam parameters for anterior surface keratometry and found that there is significant difference between flat keratometry, steep keratometry, and mean keratometry in both groups. This shows the pentacam posterior surface keratometry readings. Flat keratometry, steep keratometry, and mean keratometry were significantly different at confidence